हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस टेक्स्ट बुक में जो 6 लेसन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स दी है वो अभी हम सॉल्व करेंगे। ओके, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है, जो भी बेसिक फॉर्मूला है, वो पहले अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला जो टर्म आता है इस चैप्टर में, उसे बोलेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई विल राइट डाउन हियर, सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and it is denoted by n, refractive index. Okay, so now 1 and 2, 1 and 2. So what is this, or how you will read this? This is refractive index of second medium with respect to first medium. Okay, याद रखो कैसे रीड करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of second medium with respect to refractive index of first medium. This is very important, ये रीड करने आना चाहिए। अगर यहाँ पे n12 लिखा रहेगा, देन हाउ यू विल रीड, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। ओके, वी विल कंसिडर हियर वन मोर टर्म NGW. So now how you will read this, refractive index of glass with respect to what? Okay, refractive index of glass with respect to water. ओके, तो अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला कैसे रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो जैसे आप रीड कर रहे हो वैसे फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, सो N2 अपॉन N1. This is your first formula. So N2 upon N1 is nothing but refractive index of second medium with respect to first medium, N2 1. Similarly here ये लिखने आना चाहिए। अगर एक लिखने आया आपको तो फॉर्मूला यहाँ पे इजी है, न्यूमेरिकल्स भी इजी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ऊपर हम पहले ग्लास लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एंड बिलो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ओके, there is one more relation between refractive index and velocity, which is given by refractive index of second medium with respect to first medium is equal to velocity of first medium. V1 is what? Velocity of first medium upon velocity of second medium. अभी यहाँ पे पहले वन है तो यहाँ पे V1 लिखना है, यहाँ पे पहले 2 है तो यहाँ पे V2 लिखेंगे। यहाँ पे देखो पहले 1 है तो नीचे गया इन 1, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आपने N2 लिखा। ठीक है, सो यही फॉर्मूला आपको इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पे और एक टर्म है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ओके, this is called absolute refractive index, and here C is a constant and its value is given by 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये जो चैप्टर है 6 लेसन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अगर उसके प्रॉब्लम्स अगर आपको सॉल्व करना है तो इतना ही बेसिक क्लियर करना है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो इसमें जो भी 4 न्यूमेरिकल्स दी है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट क्या है, refractive index of second medium with respect to first medium, refractive index of glass with respect to water, refractive index of second medium with respect to first medium। तो कैसे लिखेंगे, N2 upon N1। refractive index of glass with water कैसे लिखेंगे, Ng upon Nw। refractive index of second medium with respect to 1, इसके लिए और एक फॉर्मूला जो इन टर्म्स ऑफ स्पीड रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ सेकेंड मीडियम, एंड आफ्टर दैट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा n इज इक्वल टू c अपॉन n, वेयर c इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट, and its value given by 3 into 10 speed of light, and its value is given by 3 into 10 raised to 8 meter per second. Okay, so now we will solve problems related to this concept. So here our first question is, if the speed of light in a medium is 1.5 into 10 raised to 8 meter per second, what is the absolute refractive index of medium? So in given, what we will write? They have given us speed of light in medium, so this is our V, 1.5 into 10 raised to 8 meter per second. We have to find out absolute refractive index. To find out absolute refractive index, we know that C is equal to what? Speed of light in vacuum is equal to what? 3 into 10 raised to 8 meter per second. Okay, so to find, we will write down here n is equal to question mark absolute refractive index. So we know that what? We know that n is equal to C upon V. Therefore n is equal to, what is C? C is 3 into 10 raised to 8, and below that 1.5 into 10 raised to 8. Here 10 raised to 8 and 10 raised to 8 get cancelled. We get here n is equal to 3 upon 1.5. Therefore n is equal to 30 into 115. What we do here? We multiply numerator and denominator by 10. So we get here 30 upon 15. Therefore n is equal to 15 2s are 30. N is equal to 2. Therefore absolute refractive index, therefore absolute refractive index is equal to what? 2. Okay, so now we will solve our second question. B question, if the absolute refractive indices of glass and water are, तो यहाँ पे आपको ग्लास एंड वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 3/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली. व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर? ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. तो ग्लास का कितना दिया? 3/2. सो इन गिवन वी विल राइट हियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास Ng is equal to 3/2, and second one refractive index of water, which is our Nw. So Nw is equal to 4/3. What is refractive index of glass with respect to water? So to find, how we will write down this? Refractive index of glass with respect to water is equal to question mark. So we know that what? अभी हमने फॉर्मूला देखा था Ng/W रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. तो रीड करते वक्त पहले ग्लास आता, तो इसलिए हम ऊपर Ng लिखेंगे एंड बिलो दैट वी विल राइट डाउन Nw. देयरफॉर व्हाट इज आवर Ng? Ng इज 3/2. बिलो दैट Nw इज 4/3. अब यहाँ पे हम रिवर्स करेंगे, तो 3 into 3 upon 4 into 2, so we get finally 9/8. Thus we finally get Ngw is equal to 9/8. Okay, so now we will solve our next question, solved example. In that, question number 1, the absolute refractive index of water is 1.36. So here in given we will write down absolute refractive index n is equal to 1.36. What is the velocity of light in water? Okay, so we know the speed of light in vacuum, 3 into 10 raised to 8 meter per second, and we have to find out your speed of light in water. Sorry, this is our C
this is our C, and we have to find out here V. Okay, so we know that absolute refractive index is given by N is equal to C upon V. But what is C? C is 1.36 into 10 raised to 8, and we will keep V as it is. Therefore we get here V is equal to 1.36 into 10 raised to 8, and below we write down N, which is 1.36. ओके, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, सी हमारा ओनली 3 इंटू 10 रेस टू 8 है, 3 इंटू 10 रेस टू 8. Okay, so how we will calculate this? We will multiply above and below by 100. We get here 300 upon 136 into 10 raised to 8. Okay, if we divide this number by 8, then what we get here? 8 3 is a 24, 6 carry 60, 8 5 is a 8 7 is a 56. Okay, and then finally 40, 8 5 is a 40, below that 17 into 10 raised to 8. Okay, and if we again divide 37.5 with this 17, then you get 2.205 into 10 raised to 8, and this is our V, and its unit is meter per second. Okay, last question. Light travels with velocity 1.5 into 10 raised to 8 meter per second in a medium on entering second medium. So this is our first medium. In given, we will write down here V1 is equal to 1.5 into 10 raised to 8 meter per second, and V2 is equal to 0.75 into 10 raised to 8 meter per second. What is the refractive index of second medium with respect to first medium? So to find refractive index of second medium, so how we will write refractive index of second medium with respect to first medium? In solution, we know that refractive index of second medium with respect to first medium, how we will write? So for this we will write down here velocity of first medium upon velocity of second medium. Therefore N21 is equal to velocity of light in first medium is 1.5 into 10 raised to 8, and velocity of light in second medium is 0.75 into 10 raised to 8. Here 10 raised to 8 and 10 raised to 8 get cancelled. We get 1.5 upon 0.75. So if we multiply numerator and denominator by 100, we get here 150 upon 75, and thus we get finally N21 as 2. So this is our final answer, and here जो भी चैप्टर रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है प्रॉब्लम्स है वो हमारे ख़त्म होता है. ठीक है.